तो दोस्तों आज हम करेंगे हॉर्स रूफ रिस्टोरेशन। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि हम आज एक घोड़े की नाल को लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम सबसे पहले अच्छी तरीके से इस घोड़े की नाल को निकालेंगे। देखिए हमने हथौड़े लेकर और इस औजार की मदद से पहले इसको पूरा निकालेंगे। जैसे ही आप इधर देख सक रहे होंगे हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कर रहे हैं। सिर्फ आप वीडियो के अंत तक बने रहना। अभी हम लोग धीरे धीरे करके इसको निकाल देंगे और वापस नई नाल लगा लेंगे। देखिए हम इस नाल को एकदम अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं। घोड़े को कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अगर नाल हम निकालें तो। देखिए हम इसको पहले अंदर से इस गंद को साफ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गंदी मिट्टी जम गई है यहाँ पे, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। जैसे ही इंसान के नाखून काटते हैं तो उन्हें दर्द नहीं होता, वैसे घोड़ों की नाल को कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। इसको हम इस औजार से बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। ये बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है दोस्तों। बहुत शानदार तरीके से इसको निकाला जा रहा है। अभी इसके हम साइड से अच्छे से नाखूनों को काट लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम नई नाल लगाएंगे। देखने में ये बहुत ज़्यादा शानदार लगता है। अभी हम इसको एकदम परफेक्ट लेवल में कर देते हैं, इसकी नाखूनों को घिस के, जैसे इस पे नाल ढंग से बैठ जाए। नाल को परफेक्ट बिठाने के लिए हम इसके नाखूनों को अच्छे से रब कर रहे हैं, जैसे कि इसकी नाल एकदम परफेक्ट बैठे और इसके नाखून एकदम सीधे रहें। देख सकते हैं दोस्तों हम इसको कितनी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है। थोड़ा सा वापस नाखून पे की तरफ चलते हैं। अभी नीचे से भी थोड़ा हम घिस लेते हैं नाखूनों को और अच्छा बनाने के लिए।
तो दोस्तों जैसे ही आप देख सक रहे होंगे, दोस्तों जो इसको अंत तक देखेगा उसको ही समझेगा कि कैसे इसकी नाल को अच्छे से लगाया जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से इसको शेप दिया जा रहा है। ये देखिए हमारा इसको तो देखिए दोस्तों अभी हम इसको अच्छे से घिस लिया है। अभी हम इसके सिर्फ थोड़े से नाखून काट लेते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट से हम इसके अंदर के पूरे नाखूनों को अच्छे से काट लेते हैं। What I say, 14, 15 and a half, 14 and a quarter, wasn't it? I think I said 14 and a quarter. देखिए दोस्तों हम इस रॉड को काट लेते हैं। आप सिर्फ वीडियो के अंत तक बने रहना हमारे साथ। हम इसको परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे। ये है हमारे हुफ की तैयारी होने का समय। इसको हथौड़े से अच्छे से तोड़ देते हैं। देखिए इतने गरम दोस्तों जैसे ही आप देख सक रहे होंगे, हमने इसको एकदम अच्छे से परफेक्ट शेप में दे दिया है इस गरम मोल्टेड हुफ को। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने के लिए, करीबन 5 से 10 मिनट लग गए इसको बनाने में। तो हमने इसको बराबर बना तो लिया है। इसको भी थोड़ी देर के लिए आग में रखेंगे।
फिर उसको वापस हम अच्छे से करेंगे। देखो हमारा रूफ लगभग तैयार होकर बन ही गया है। हमारी घोड़े की नाल लगभग तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए इसको कितनी जोर जोर से हथौड़े मार के बनाया जा रहा है। बहुत ही शानदार तरीके से। लगभग ये भी तैयार हो ही चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी तैयार घोड़े की नाल। ये पूरी हैंड क्राफ्टेड है, कोई रेडीमेड नहीं है। देखिए दोस्तों इस घोड़े की नाल को हम वापस से गर्म किया है। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये बहुत ही मेहनत का काम होता है दोस्तों। घोड़े की नाल बनाना मजाक की बात नहीं है। ये देखिए इस पे कुछ तो भी पाउडर लगाया जा रहा है। इसको लगता है इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया गया है। घोड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है दोस्तों। जैसे ही आप देख सक रहे होंगे कि ये घोड़े की नाल लगभग रेडी हो चुकी है। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद इस घोड़े को ही नाल को लगा देंगे। तो दोस्तों हमारी नाल हो चुकी है रेडी। सिर्फ इसमें अभी थोड़े से चेंजेस करने हैं। इसको बीच बीच में हम होल कर देंगे हथौड़े से।
अभी इसको पूरी लेवलिंग करते हैं हम। हमारी घोड़े की नाल तैयार हो चुकी है। हमारी घोड़े की नाल लगभग रेडी होने पे आई है। ये पूरी लगभग तैयार हो चुकी है, थोड़े से बदलाव लाने हैं सिर्फ। इसको वापस गर्म करते हैं। अब ये हम हमारे घोड़े पे लगाएंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों आप देख ही सकते हैं हम उसको कितनी अच्छी तरीके से लगा रहे हैं। पहले उसको ऊपर से साफ कर रहे हैं लगा के। इसको एकदम सफाई से किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली तरीके से किया जा रहा है दोस्तों। घर पे ट्राई मत कीजिएगा।
नाल को वापस से आग में डाला जा रहा है दोस्तों। अभी नाल आग से वापस आई है, तो देखते हैं क्या होता है। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से शेप दे दिया है। इसके नाल के छेद बड़े किए जा रहे हैं। अभी इस नाल को अच्छी फिटिंग में लगाया जा रहा है दोस्तों, जैसे आप देख सक रहे होंगे। इसमें कीले ठोके जा रहे हैं, जैसे मजबूती बनी रहे नाल की। तो दोस्तों हमारी ये नाल रेडी होने ही वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों हमारे नाल को आप देख ही सकते हैं। अब इसको अच्छे से घिस देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सक रहे हैं, इसको कितनी सफाई से किया जा रहा है।
इसको अभी टाइट किया जा रहा है एक इंस्ट्रूमेंट से। लगभग ये बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हमारी घोड़े की नाल तैयार हो चुकी है। अभी सिर्फ उसको हम पेंट कर लेते हैं अच्छे से। अभी आप इसको देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। दोस्तों ये काम में बहुत मेहनत लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो दोस्तों देखिए एक और घोड़े की नाल का वीडियो। तो दोस्तों देखिए हम इस घोड़े की आज नाल को बदलेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से बदलेंगे। पहले हम इसकी नाल को अच्छे से बना लेते हैं। ये देखिए 1 वीक लेटर का। जैसे आप देख पा रहे हो उसकी नाल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो हम इसको धीरे धीरे करके बना रहे हैं। पहले इसको साइड में से हम काट लेते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये काम एकदम सावधानी से करना पड़ता है दोस्तों। इसकी पूरी पैर की गंध निकल रही है। जैसे ही आप देख पा रहे होंगे कि इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जा रहा है। Starting to calm down. He's just gonna. They just have to essentially reline it. Oh, that's right. अभी हम इसके दूसरे पैर को पकड़ते हैं। Set the clip a wee bit too. Yeah, so like you can see I've got big hit. अभी हम किले से इसकी अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। Going that much higher. पहले इसके Really bad, but it's not. पहले इसके पैर को हम साफ करेंगे, फिर उसको नाल डालेंगे। Almost like we know what we're doing. Almost. I did bring this medial in alone by itself because it looks it's still looks up to it. दोस्तों ये काम बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है।
तो आप इसे घर पे ट्राई मत कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। I know. अभी हम इसके पैर को अच्छी तरीके से घिस लेते हैं। Go ahead and get a $20 sign. अभी हमने इसको एकदम अच्छे से पन्नी में पैक कर लिया है। अभी हम इसके तीसरे पैर को लेते हैं, आगे वाले पैर को, उसको भी अच्छे से साफ कर लेते हैं। इसको पहले हम अच्छे से टेप से चिपका लेते हैं। अभी हम इसके अंदर कीले डालते हैं, जैसे कि इसको खोल पाएँ। अब इसको अच्छी तरीके से हम क्लीन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से ये किया जा रहा है। ये काम धीरे धीरे होता है। Stressed out. Yeah. No. अभी हम इसके एक्स्ट्रा नेल को काट लेते हैं। घोड़े के इस काम में बहुत ही सावधानी लगती है दोस्तों। Really looking much flatter on that right front. This one. Oh, really? He's like, airplane. अभी हम इस इंस्ट्रूमेंट से पहले इसके पूरे पैर को साफ कर लेंगे, उसके बाद इसको हम चारों पैरों पे घोड़े की नाल लगा लेंगे। Two more seconds. Easy guy. He's already on that. तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक स्मॉल शू है, एक बिग शू है, एक बड़ी नाल, एक छोटी नाल। तो हम So you see the difference in the distance in relation to the front. That's called the dorsal, right? The front here. So this distance now is longer than this, right? Right. So, but if I trim this down, because it grows at this angle, the more I trim, the further back the buttress goes, right? So what happens is when it's pushed too far forward, you actually will get loading. So his navicular, just say roughly somewhere in this range. If you let it run too far forward,
that you actually just get constant pressure right over the navicular because you're squishing it like that. So you can drop the heels too far. तो दोस्तों हम इसके इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं. So just like with any profession, you have to know where, you know, too much, not enough. That's why you educate yourself. That's why you practice. Blah 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 blah. So I'm not really going to take a whole lot off here. I want to try to take a little off, see if I can get him to bear more weight here instead of on the sole. But as you can see, most of it's coming off here. So just standing was probably uncomfortable for him. So I don't know if you just noticed, like when I put my foot down and read. तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये नाल कितनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है पहले से. Like he took a long step. पहले ये कैसी थी और अभी ये कैसी दिख रही है. Just moving his weight. पहले बिल्कुल ही ख़राब दिख रही थी, अभी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. So yeah, probably what happens too is on the bottom of the cuff right here. अभी हम थोड़ी देर के बाद इसके पैर को नाल लगा लेंगे. And when, hold on, I know. When जब घोड़े को नाल लगती होगी तब घोड़ा बहुत खुश हो जाता होगा. You know, sole pressure, whether from shoeing or anything, it's essentially like having a tourniquet, just shutting it off. And you know, we can't say for sure, but you can certainly guess when you shut your blood supply off, right? It goes numb, it gets, you know, hurt, you can get necrotics, blah blah blah. On average, you want the buttress to be at the highest and widest point of the frog. So I've already taken quite a bit of heel off. These are just markers that we use to determine like where to trim the heel to. So his heel was really pushed. दोस्तों आप देख सकते हैं हम कितने अच्छी तरीके से इसको काट के बढ़िया कर रहे हैं. Why do you tap like that? I'm just getting the like that to get the like if there's. बहुत परफेक्शन से काम कर रहे हैं दोस्तों हम. अभी तक तो सब सही चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है. Like what are those? They're not bush babies, but the weird Madagascar and lemur things. They have that claw and they checking for grubs. Checking for grubs in there. So like this discoloration here, this has nothing necessarily to do with the shoeing. This is just barefoot probably. That shows like a history of bruising from just standing on this. Like I said, that's unrelated to shoeing. Well, it could be, but in this case, I think it's unrelated to shoeing. तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से वो साफ़ हो चुका है. Are you observing that? Or? Yeah. No. Maybe. I am going, if you want to say slowly, but that's more partial. There's two reasons to that. Hold on. One, his tolerance is his mental tolerance is not there, so I can't be as aggressive because when you're really aggressive, you तो run the देख risk सकते हैं आप दोस्तों. when he makes a move or a jerk, making a big mistake. So you have to be careful with that. And two, as I'm trimming I'm going small amounts because his whole foot is twisted to the medial side. So, you know, once you remove it, you can't put it back on. So I'm making small adjustments to where I feel I can get the foot rebalanced, essentially. तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्यारे घोड़े को.
तो दोस्तों हम जैसे आप देख सक रहे हैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन से काम हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत ही खूब, शानदार। बहुत लंबी होने वाली है ये वीडियो, तो अंत तक बने रहें। Okay. I'll let me get it. Right. Hey, he's a little further for sure. Hold on. Nah. What are you grinding over? Behind shoes. Oh, I forgot to do it. did you trim the medial heel? Can you see it or no? I can't see them. Okay. I know that We'll mark the one, yeah, That's fine. that one's the one kind of comes in a little funky. We'll figure that out. Hold on. Hold on, Apollo. तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। अभी तक तो सब सही चल रहा है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। इसके दोनों अभी हम पैरों को खोलते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। अभी घोड़े को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होगा। Hey. Hey. अभी हम इस काम को और परफेक्शन से करना है। इसको हम टेप से अच्छे से चिपका लेते हैं जिससे कि घोड़े को कुछ महसूस ना हो। Right? So on his frog hair, which isn't terrible, but then you can see it's up here, here. So you got some high spots and low spots.
But the point is for him to be on the shoe. On the yeah, or if he's barefoot, like even when you prep a foot to shoe, ideally you would want them to. देखिए ये इसका पैर कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है। अभी हम इसको ठीक करने वाले I हैं। don't worry too much about this. Like I'm okay with that. But this one was a little bit worse. But like just having pressure spots here and here are a little bit. You know, ideally you want like this. Like see this rim? Even that little bit is great. Just want it all the way around. This one's less. Let's hoof that in. तो गाइस जैसे ही आप देख सक रहे हो कि हमने लगभग काम कर चुका है। बस इस पैर को और अच्छे से बना के इस पे हम हूफ लगाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गाइस, बहुत जल्दी हो जाएगा ये काम। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बनी है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप देख सक रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। पूरा लगभग हो चुका है। सिर्फ अभी इन चारों पैरों में नाल लगाना बाकी है, तो आप वीडियो के अंत तक देखते रहिए। देखिए हम नेल को कितना अच्छी तरीके से निकाल रहे हैं। घोड़ा चल के इतना इसका पैर ख़राब हो जाता है कि जब इसको नई रूफ लगाने की बारी आती है तब तक इसका पैर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। तो देखिए हमने इस घोड़े की नाल को कैसे एकदम बढ़िया तरीके से बना लिया है।
तो हम इसको लगा देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा लगभग काम हो चुका है। Still in there like this. Probably pointing, I might be exaggerating a little bit, but it's in about this position, and his hoof is like this. And so what happens is it stretches all this, and he's probably starting to rotate. इसको बहुत अच्छी तरीके से क्लीन किया जा रहा है। See how wide that is? Yeah. So we'll be able to help some of that for sure today. Hold on. Hold on. तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। ये सबसे बेस्ट रिस्टोरेशन वीडियो होने वाला है आज तक का, जैसे आप देख सकते हैं। तो हमने लगभग काम कर चुका है दोस्तों। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कितना अच्छी तरीके से हम इसको बना लेंगे। आप देख सकते हैं अभी हमने कितना बढ़िया तरीके से बना लिया है।
I don't think we need to worry about him being sensitive with that stuff. तो चलिए हम दूसरा हुफ बनाते हैं। जब तक एक और घोड़े की नाल तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको परफेक्ट लेवल में लाते हैं। इसको लेवल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा हुक अच्छे से लगता है नहीं। Yesterday was my last day of school. तो दोस्तों जैसे ही आप देख सकते हो कि हमारा ये एकदम परफेक्ट बन चुका है। दूसरा पैर भी घोड़े का बहुत अच्छी तरीके से बन चुका है। ये घोड़े की पैर में भी अच्छे से माप चुका है। इसके अंदर से हमने एक अलग से जाली भी लगाई है जो इसको सुरक्षित रखेगी। So that's just showing you as we go, like, we're going to take off this speed for these 5 minutes.
तो इससे हम और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। Easier. I thought you said she could stay in there forever. If only. She says I want to go on my turnout now. I had to work earlier, and then I had to stand in the house for that. Hey, 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 hey. Hey, stop. Oh. Should be another 200. We'll probably need another tip to set up this guy. Make haste. Hey, hey, come on. Ooh. What do you want? Follow the video. That's it. Business is over. Come on. Oh. What it? तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ तो भी लिक्विड या कुछ डाला जा रहा है जिससे ये और मजबूती से बनेगा। Sham is up. तो दोस्तों Well, machine done. जैसे आप देख सक रहे हो You're pretty efficient. It's more to build with. इसमें हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। Somebody ordered way too much. Hold on. I'm not hitting the shoe. I know it sounds like it. This push is so hard. That was धीरे धीरे काम हो रहा है दोस्तों। Actually, we'll take your rest. Hold on, guys. I know. Come on. Hey. Easy, Apollo. Easy, bud. Easy.
sure you're really busy when you get on schedule. I have a saddlebred, an Arab, a half Arab, and a quarter horse. And everybody just अभी हम इसके अंदर के नेल्स kind of like to be a निकालेंगे. because two of them are going to go on to having show shoes on later. So I don't want to be cutting them off. I'm sure you know what's up. But you tell me. वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है. So just tell me when we can set that up, and I'll like to be here. Like I said, I'm sure you're a little busy. Yeah. So was that 4? Something like that? Yes. 4. And I only told you to brief because, like, on the saddlebred mare, I want to be here. She's going to be a show mare. So I don't want to just say, yeah, just come up. You know, I just hang around. I can tell you now. I'm sorry. No, I can't grow a bunch of foot and then it disappears. No, Okay. So should I call you, or do you want to Yeah, next probably. week or later? I'd have to. Four towns just here. I'm trying to think. Are they how long term as far as like? Is this just one time thing, or you? No, I'd have you keep doing it. Like okay. I only ask because it just depends on the schedule. Right. Exactly, trying to figure Right, and the one actually the purebred Arabian, he doesn't have plates on, so he's gonna need. No, we're gonna reset him like that, but he'll need to be reset kind of like, I don't know what your breed background is, you know, kind of like an English horse, but the shirt's kind of just dressage. And if you've done a lot of performance horses, I'm sure you're like totally overqualified for doing it that way. I meant, you do that kind of You've been really traumatized, haven't you? Well, no, if you just do like straight quarter horses, I didn't want to say, that's my saddlebred, which seems like a Tennessee Walker. Also, what I can tell you about my ability to tell you what I don't. Okay, and that's all I was trying to say. I wasn't saying you don't know this. What I'm saying is I'm confident. I don't feel comfortable doing something. तो हमारा लगभग काम हो चुका है दोस्तों. तो थोड़ी देर में वीडियो ख़त्म हो जाएगी. What? Don't tell Mark what, Jeremiah. Oh, really? Nice. Come on. It does, I mean, having information is all. I know, that's Knowing yeah. kind of what we're looking at, what we need to keep an eye on, you know, that. तो आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम अभी एकदम नाल को एकदम परफेक्टली डाल देते हैं. ये हमारा फाइनल स्टेप है. Oh yeah, I'm gonna actually call him now. And I'm Hey, you're almost done, big guy. I know. Whoa. तो दोस्तों ये हमारा आखिरी पैर, ये हमारा सबसे फाइनल स्टेप है. इसके बाद That's it. This is about how hard it'll set up. देखते हैं आगे क्या होगा. And this stuff is softer.
तो दोस्तों देख सक रहे हैं आप हमारा घोड़ा कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है। देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर का ये वीडियो। बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसको बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आप वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे ये घोड़े की नाल को कैसे बदलते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इस घोड़े की नाल को बदलेंगे क्योंकि इसकी नाल बहुत ही ख़राब हो गई है। उसके नाखून भी बहुत बड़े हो गए हैं। तो आज है हमारे साथ 3 लोग। आज हम इस घोड़े की फुल हॉर्स हूफ रिस्टोरेशन करेंगे। तो हम इस घोड़े को अंदर ले जाते हैं, अंदर इसका काम चालू कर देते हैं। तो हमारे साथ वीडियो तक अंत तक बने रहना दोस्तों। A lot of people don't like shoeing in cross ties, but I've got to where I absolutely love it. We make sure that when we snap them up, they're hooked to the entire halter right here, as you can see. Make sure that it's a halter that fits. दोस्तों आप हमारे घोड़े को देख सक रहे हैं अच्छे से। These cross ties are built to where the horses don't want to back up. We rarely have anything pull back in here. Everything's pretty comfortable, and I think it's because the horses can see each other. As you can see, we normally have this all full of horses, and they would be looking right at each other. And first things first, secret to anybody's heart is usually food. He's a big fan. So, if you look at her feet real quick, you can tell that she's barefoot on the front, has been for a while. She's been getting a little sore on this right front periodically. Nothing too serious. दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे घोड़े के नाखून बहुत ही ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। तो हम इसके ऊपर घोड़े की नाल लगाने वाले हैं आज। इसकी नाल पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है और उसके पैर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो आज टाइम आ चुका है इसके बदलने का। We need to put some shoes on her, and she doesn't have real great balls, as you can tell. So we got some x-rays taken just to be proactive. Saves a lot of guesswork. And as you can see, the left front, everything's pretty basic. दोस्तों आप देख सकते हैं ये लैपटॉप में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Column alignment, nothing out of the ordinary. Then you get to the right, and it looks like, as you can see, there's just some slight rotation, as you can see there. And of course, she's really short, as you can see that there's no sole depth. But this makes me think it's either just an upright foot, high-low, mild case of it, or there's been some slight rotation, as you can tell from this distance, that's a big distance. So, bony column is tipped forward just a little too much. So, ideally, like the right front, that's what we want, like this. And what we have is that, to where it's tipped down just a little farther. Not a deal breaker, nothing really to worry about, but
with the excess out here, I kind of want to put some breakover on her to help her move better. So normally I'd be wanting to do like a St. Croix Advantage shoe. That's a nice shoe. It's got a little breakover. It's got some nice support in the heels, and it's really great for thin walls. Pretty much perfect for her. But this horse needs to get off the ground. So right now what I want to use is the Mustad Equilibrium shoe, roller shoe. It's pretty sweet. It's got a breakover all the way around, as you can tell. It's got a bevel all the way around the whole shoe, just like that. And I want to use a leather pad this time. The only difference between a leather pad and other pads, well, between like a 4-in, is that, let's say you stick this shoe on a horse and you pour it in. You're only filling in the shoe's width, right? But where we want to get her off the ground so she has a little more protection, that's 2 pads, of course. But you know that it's going to raise her up another 1/4 of an inch or whatever that is. So the goal is protection, getting her off the ground, and breakover. So pad, shoe. Nail of choice today is the Mustad MX50, and they're coated with Endura, so it makes them a lot stronger, and they don't rust or break down. So smaller nail for the thinner walls, and then extra strength. So without any more ado, let's get into it. तो दोस्तों चलिए लगाते हैं अभी घोड़े की नाल को। First things first, always like to clean up the frog because I decide how much to trim off by where the real apex of the frog is. And the goal isn't to over trim the frog, that's the last thing I want to do. But I just want to kind of manicure it a little bit, just so it's healthy. You can tell that she's overreached right there. Didn't do a very good job trimming this frog. Next, straighten the bars. So she needs protection, so I don't want to go after much of this, but I need to straighten the bars because the bars are much like a rafter in a building. A bent rafter is pretty much useless. So straight is strong. Definitely not going to use my nippers, just going to use my Excel Green Tang rasp here. तो दोस्तों जैसे आप देख सक रहे होंगे इसको बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन से काम किया जा रहा है। दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत होती है, तो घर पे आप ट्राई मत कीजिएगा। Very important that every stroke overlaps each other. That's a lot easier to keep the foot level. That one's pretty good. Always set it down gracefully like that because horses trust you with their foot, and when you put it down like that, it strengthens that trust that, hey, I can trust you with my foot. This guy's going to be nice to me. And that's one thing I learned from Chris Cox. And he swears that that's a big reason why horses are bad to shoe is because they just lose faith in the farrier, and that's a great way to get it back. तो दोस्तों अभी हम काम चालू करते हैं। पहले हम इसको अच्छे से घिस लेते हैं। इसको अच्छे से घिसने के लिए हमको इस इंस्ट्रूमेंट का मदद लेनी पड़ेगी। Easy to over trim them and make things look nice, but they need that for strength in their foot.
And if you do it first, you usually don't have to do much at the end. Alright, so this one is the problem foot. So first step, I'm going to trim the frog up, find the real apex of the frog, true apex. Okay. This is tough because the frog isn't in very good shape. I didn't do a very good job trimming it, but whenever it's got a flap like this, I always want to kind of take the lip off it, because if it's hanging up straight and sharp, it just bends over, where if it's got kind of an edge, kind of a softer edge to it, it'll actually push down and have normal healthy frog function. Straighten the bar. दोस्तों हमको इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करना पड़ता है. Gangster don't want to go in here because that's where she didn't have any foot anyway. So pretty much just trim the heel back. You'll see me check balance in the hoof quite often. It's just kind of like the old carpenter rule. You can only cut so much, right? So measure twice, cut once. It's easy to take it off. It's hard to put it back on there. I can see I'm just a little high right here. Do a very good job doing my frog there, but it's kind of welded into the sole, so those are usually pretty hard. Now we'll check this again before I shoe her. Wall isn't in very good shape there. You can tell I didn't touch the sole, and look at that. Zero depth. Just like we saw on the x-ray. All I'm doing when I'm doing this is getting the distortion off, and I'm putting my finish on first. So there's not a lot to do here. You can see just a slight gap in there. Just like we saw on x-ray, there's just a little extra toe here. But not much. Usually try to get them to where they're pretty straight, but you can overdo that pretty easily too. दोस्तों आप देख ही सकते होंगे, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको एकदम अच्छे से समझ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. हम इसे बहुत अच्छे से दिखा पा रहे हैं. वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है. Now we're going to shape our shoes. These have a really great shape. The problem is this foot isn't that good, so. देखो दोस्तों, इसका शू देखो कितना बढ़िया क्लियर एकदम परफेक्टली उसको आ रहा है. तो हम यही शू को अभी इसको लगाएंगे. We're going to have a little too much shoe, but we can just grind it off. बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शू लग रहा है.
So this is the bigger foot of the two. You can see this one almost fits the way it is. आगे वाला पैर इसका बड़ा है तो इसको आगे बड़ा शू लग रहा है, पीछे वाला छोटा है इसलिए छोटा लग रहा है. Shoes really make your life easier. So you can see it's straighter here and nice and round here. So I just need to bring this in. Should fit up nicely. Have Jeb put a pad on it. We'll be good to go. These aluminum shoes, they can't stay in the forge very long, but if you do it right, it'll make your life a lot easier. A little warm over here by the fire. It gets pretty nice with, or get kind of spoiled being in the air conditioning in here. So it doesn't take very long. What I'm looking for is for it not to ting anymore. So you can look at this new shoe over here. You hear that? It's a lot more dead. And when you're building handmade shoes, you mark it with your wood hammer. That's why I don't tape the bottom of my hammer, so you can see a black mark. For me, with keg shoes, that's pushing it. I'd rather hit them a little cold than I would ruin a shoe. So I'm just straightening the medial side right now, or the right front. Bringing it in. I'm going to mark it so I know which foot is which. So every time I'm using this anvil, I'm trying to use the edges. This edge, that edge, and this edge. And then I'll put my hammer there, and it really lets me allow or visualize the foot, and that is the most time-saving thing there is. So I want my heel to line up with my toenail as close as I can. So you can tell this side's straighter, and this side comes out around just a little bit. I think I need to tighten up the toe a little bit, so I'm going to go a little bit like that, a little bit like that. And with her needing depth, if you just cut your shoe out, it'll prevent sole pressure, but it'll also give her just a little more depth. हम इस हॉर्स शू को यानी घोड़े के नाल को एकदम अच्छे से शेप में ला रहे हैं, जैसे कि घोड़े की नाल परफेक्टली फिट हो जाए घोड़े पे. अभी तक तो सब सही चल रहा है, आगे देखते हैं होता है क्या. I'm going to set it back a little bit, so that's about where I want it there. The lateral side's pretty close. The medial side, we'll see by quite a bit. You can shape these cold. It just hot is a lot easier. So I just straightened it there. And brought it in. One more time down. Toe is a little bit too wide. This is a little bit here, so I'm going to put it together. तो दोस्तों हमारी नाल लगभग रेडी हो चुकी है, अभी सिर्फ इसकी बारी लगाने की आई है.
थोड़ी देर में इसको लगाना चालू कर देंगे। Let me rasp, Jeb. Here's a little Dusty Franklin trick for you. Works pretty well on concrete. Getting there. Use the marker, it really helps me make sure my shoe fit is spot on. Now we'll take it to the grinder. So now you can easily see my marker, and that's where she's so straight. But my nail. तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे होंगे कि हमने नेल लिया हुआ है, मतलब घोड़े की नाल ली हुई है। अभी हम घोड़े की नाल को इस मशीन से एकदम परफेक्टली शेप कर देंगे। इसको हम एकदम परफेक्टली शेप करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ही एकदम इजीली वेयर यूज्ड टू हो जाएगा घोड़े को। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है दोस्तों, तो वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना मत भूलिएगा। Not completely level. Step over to the mobile rig. There we go. Here you go, Jeb. Jeb's going to show you how we do our pad. तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो कि घोड़े की नाल में हम अच्छे से छेद कर रहे हैं, इसमें होल्स बना रहे हैं, जैसे कि ये घोड़े में हम फिट कर पाएँ। दोस्तों एक काम बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली किया जाता है, तो इसको घर पे ट्राई करना मत। Those rivets will never come out. He just fits it in there and it'll swell up in there. Now we'll grind it off smooth and those will never come off.
have to use a bandsaw, but it sure does make life easier. You don't have to drill the nail holes out, but it sure makes it easier nailing. It's a lot easier when you're working on a thin wall horse to get the nails exactly where you need them. And now, for the most important part. Very nice. Yeah. Yeah, would you shut the forge off, please? Good time to check balance again. Holding it with my opposite hand, looking straight down the leg. I truly believe that the most important part of the shoeing is the trim. That's one thing that cannot be underdone. Check our fit one more time. तो दोस्तों हमारा एक पैर का तो लग गया है अच्छे से, अभी दूसरे पैर का लगाना बाकी है, Manageable shape in the foot. दूसरे या तीसरे पैर का. Because we want this foot to, we want to train this foot where we want it to go. We want it to look like this when we're done, and make sure that we're nailing in the correct place with the thin walls. That looks good. Put a little bit of hook packing in there, make sure nothing gets inside our pad. If you're working on very many thin-walled horses, I highly suggest using an Enduro-coated nail. Mustad makes them in several different kinds. If you like the city head, that's fine. This is the heat head. This is the MX50. Just fits these shoes a little better, but just any nail will work in these shoes. Got to be real careful when you're shoeing a thin-walled horse. Make sure your nails are where they're supposed to be. I always laugh every time I tap on a shoe like that, because when I was young and dumb, I remember watching an older farrier shoe, and he would tap his shoe. I would think to myself, you know how I know your shoe doesn't fit? Because mine went right on every time. Looking back, he was probably getting them in a great place, and I was just nailing them on.
5 nails is plenty, especially on a double lock horse, but this horse will pull shoes and it's got a pad, so I'm going to try to sneak another one in. With any sensitivity that I would feel right now, I would pull it out. Take just a little higher nails, especially on a poor quality walled horse. We'll try to drive them up just a little higher. And the old cheater rule of using your ring finger where it's supposed to come out is what I rely on here. And all that does is make you tip the nail in the right spot. And sometimes you hit the same nail hole. That'll be dry. Tapping it keeps it in the foot. Hard blows makes it come out. Feel like I got my shoe placement where I want it. Just gonna bevel this toe a little bit right now. And I'm gonna block my nails. You don't have to block them. I believe it matters the most of driving a good nail, but it just kind of pops it out and makes it easier to finish. Always set it down nice and easy. Licking her lips. Yeah, she was just licking her lips. We kind of missed it, but I really believe we've had a lot of sore-footed horses that we've done that to, and we shoe them, get them off the ground, and they lick their lips. It's got to feel good. So, that's awesome. So now, I'll go shape this other shoe. Hopefully it goes a lot better than the other one. That was kind of a beating, shaping that shoe. There we go. So, I always like to keep moving it. You don't want to leave it in there very long, especially when this forge is already hot. Some guys brush it to know when it's ready. I just kind of move it around, and then I tap it. That's probably pretty close, especially since I don't have to do too much to it. So, you can almost tell when you set it down on the anvil. It's got a little more pop than the other one did, but not much. So, straighten the medial, branch a little bit, bring it in. The lateral is pretty good. And you can absolutely do this cold. It's just, I like doing it hot. It's just a little easier. So, put it in here. Always looking at a box. Straighter here for the medial. I feel like I should bring that in just a little bit more. So at the widest point, I start there. Just roll it around. I think that's going to be pretty close. So I'm just going to cool it. You know, the hot shoeing and cold shoeing thing, there's a lot of people that are all for hot shoeing and some people that are all for cold shoeing. I believe that when you sear the foot, it does make a perfect fit, and that's great. You can achieve that cold shoeing too. The reason why I like hot shoeing the best is because it's for me. It's easier on me. You can just tap the shoe instead of hitting it hard, and you can get a lot more things done because steel and aluminum, they just move easier when they're hot. So, there we go. That's a little more what we're talking about right there. Pretty good. First try that it made up for how long the other shoe took to shape. Right.
tap it shut just a little bit. There we go. That should be great. I almost said perfect right there, but one of our sayings here at Old Sneak Line is if you think anything's perfect, you're not looking. तो दोस्तों देखिए, आप जैसे देख सकते हैं ये शू बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली बन चुका है। So if we weren't putting a pad on, it would just let the foot clean out easier. And I do think horses pull a lot of shoes from excess shoe left on the inside right here. So I'll go grind it. And Jeb, you want to start finishing that foot right there? You can watch Jeb. तो दोस्तों अभी हम इसको घिस के परफेक्टली शेप में ला लेते हैं।
about every week around here. Put packing in there. Have to tweak something in my pad. That's so nice. Double check the fit. Like the way that one's headed. तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही हमारे घोड़े का नाल लग चुका है। Taps kind of encourage you to keep it in the foot. And one thing, I think Denver Styled is the one who told me about this, I think, on Facebook. But if you've got a sensitive horse and you just dip your nail in Vaseline, it'll want to go through the hoof wall a little better. So she's taking it pretty good, but that's just an example. There we go. See if she licks her lips again. Ah, see? Yeah. That's awesome. Jeff is a finishing extraordinaire. Likes to make it look like glass. That's a gouge. You can use a rasp too, but that just makes like an ice cream scoop effect, just right underneath the nail, putting that clinch a good spot to sit. तो दोस्तों हमारा लगभग काम हो चुका है। Right in the gouge. Yep. There we go. तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। Leather pads down. And Jeff did a better job putting the pad on than I did. So he's just kind of polishing. He's not really rasping at all. We're going to clean it up with the sanding block. And if you guys don't know what this is tough stuff. They actually coated an egg in this, and you could drive a nail through it, and it wouldn't break. This is pretty good stuff.
walls a little stronger, definitely a necessity for thin wall horses. Very nice. That's just the sealant that just protects the hoof that we've opened up by rasping it. Very nice. See that? Put it back up there. That's the idea with the gouge. You can't even feel those nails right there. That's beautiful. So, तो दोस्तों Kelton wants इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।